with us, who will take you through a tour of what Instabase offers to its customers and clients across the world. About Anant, I'll just say two lines. Like, Anant completed his basic education from Pune. After that, he did his engineering, and then he moved to Stanford for his master's. And while being a student at MIT for his PhD, he started Instabase in 2015, which became a unicorn in 2019 with a $1 billion valuation, and it is currently a $2 billion valued company. So we have Anant Bhardwaj with us, the founder and CEO of Instabase. Over to you. Thank you. So I think what I will do is... Yeah. Okay. Can you hear me? Okay, so yeah, so what I'm going to do is basically just going to take you through sort of like a quick tour of how Instabase started, who are our customers, and of course then a quick demo of what the product looks like and how this could be relevant from the context of India, especially given like how it can transform a number of different industries, and of course, you know, the different functions and processes within the government and so on. So I think we'll go to the next slide. So before this, I was a PhD student at MIT, dropped out around end of 2015 to start this company. And our mission is to turn the world's unstructured data into insights instantly. What does this really mean is that we believe that any new breakthrough or any big discoveries that will happen over the next coming decades is going to be from the understanding of unstructured data. Whether it is going to be in the field of biology or medical science or space or physics, it's going to be by the analysis of the vast amounts of unstructured data. So far, we have only been able to make sense of data that can nicely be represented in table format, right, rows and columns. And now with AI, what you can do is you can take like a lot of data that is just like in completely in unstructured format, like audio, video, images, files, and so on, and you can understand them. We basically were valued at about $2 billion, 300+ person company across the globe. We are based primarily, started in the United States, so offices in San Francisco, Menlo Park, New York, and then we have offices in London, in UK, and then Bangalore, which is in India. Previous slide. We work with a number of large enterprises, a number of large organizations across the world as our customers. So you can see a lot of names that you might already be familiar with. So big banks like JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, HSBC, Standard Chartered, and so on. Then we have a number of like large insurance companies like AXA, Northwestern Mutual, a number of tech companies like Uber, for example, like whenever Uber onboards a driver, right, they have to process a bunch of paperwork, right, their driver license, bunch of their car, insurance paperwork or car paperwork, all of that is done through Instabase. And then, the company like Colgate, for example, whenever they do invoices and those kind of things, they use Instabase. So if you move to the next slide, this is the history. So we started around August 2015. Before this, I was a PhD student at MIT. Since then, a number of prominent investors have gotten involved with Instabase. So Andreessen Horowitz, so Greylock and NEA did the seed round, Andreessen Horowitz Series A, Index did Series B, which was a $1 billion valuation round, and then we did the last round, which we announced earlier this year, and that was a $2 billion valuation. So at the very, very core, which I talked about, what we help you do is we help you convert all of these unstructured information into some decision-making ability immediately. Like whenever you apply for, passport or opening like house property paperwork or submitting electricity bill, a lot of documents you submit, right? And some humans have to go and understand it. What if machine or artificial intelligence can understand them automatically? That would be super, super cool, right? So that's what we help basically organizations do. So I'll just give you a quick demo of like how this all works. So you move to the next slide. So you're going to basically see like how this can be applied in real life. So this is what the website looks like. It's called aihub.instabase.com. This is available in the sense that any one of you can go and log into this website
and you can log in with your email. So it's like freely available for anyone to play with up to a certain point, and after that you can pay more money to use more. So I'll just show you like how easy it is to use this. So for example, let's say somebody submits a passport, and you have to figure out what the details are. Right now, somebody has to manually look at this passport, enter this information in the system. Right? Like that's a lot of work. You should be able to just simply say, extract all the information from this passport in table format. And that's it. Artificial intelligence is going to go look at this particular passport and should be able to give you all the answers immediately. We'll just wait, and you can see the answer is coming, it's creating a table for you, and then it's sort of like figured out all that stuff. So currently, like you could pass this to underlying whatever other systems are, or Excel sheet, or whatever we are using. But the whole idea is that AI basically looked at this, understood every single thing, and extracted it. Now I could also ask them questions, which is like, when does this document expire? Right? Or things like, which country does this person belong to? And when you ask these questions, artificial intelligence will be able to go and understand these things. Like you say, like, which country does this document belong to? So what is happening in these cases is, instead of like humans needing to look at these stuff, machines or artificial intelligence can do it by itself. So same way, like for example, let's say I have a pay stub, and I have to figure out like how much loan this person needs to get. Now this is a pay stub only for like 2 weeks, as you can see here, right? Between August 15 to August 28. But now if somebody applies for a loan, for a bank to give a loan, they need to understand how much money you make per year. Now somebody has to manually enter, do all the calculations. That's like a lot of work. You should be able to ask AI, which is like, hey, go and extract the net pay and the pay period, and use that to calculate the annual net pay. Okay, that's what I want to know to figure out how much loan this person could be given. Now this artificial intelligence system is going to take your question, understand all of this, and say like, net pay is this. Since the pay period is 2 weeks long, there are 52 weeks in a year. That means 26 times this person is going to get paid. Therefore, annual net pay is just multiplied by 26, and therefore the answer is this. Right? So what you're basically seeing is a lot of things that currently require human to be able to do this and understand, machines can do it. Like for example, like this is my personal document. So like this is AHuge. I should be able to simply say the same thing, right? Which is extract all the information, let's say in a table format. And this really doesn't matter like what format documents is written in, what language it is written in. And as you can see here, right, like basically all the key information it will be able to get me. Now let's see, like, let's get into slightly more complicated stuff, right? Currently what you saw was simple things. So as soon as we start getting into more complicated documents, let's say I am an investment banker, and I'm looking at this annual report of large companies like Apple. Apple is one of the biggest companies in the world, and I want to analyze like how much each product of Apple is making. Who wants to read this 80-page long document? That's like a pretty long document. You have to understand like so much English. That's like a lot of work. So I should be able to say, extract the net sales of all different products of Apple, let's say for the last 3 years. For the last 3 years. So if I do this, now this machine or लीडर लिखे थे कि हम चाहते हैं कि इतने लेट आने में क्यों हुआ, इतने अच्छे प्रोजेक्ट आने में क्यों इतना लेट हुआ, ये जानना ये जो टेक्नोलॉजी है जनरेटिव एआई, ये काफ़ी रीसेंट टेक्नोलॉजी है। तो जो इसका जो पहला बिग कमर्शियल प्रोजेक्ट आया वो लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में आया। हमने अराउंड अप्रैल और अराउंड एंड ऑफ मे अर्ली जून लॉन्च किया था ये, और उसके बाद हमने इंडिया में उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था एक्चुअली। तो जो इनिशियल जो टेस्ट किया था हमने इंडिया में वो स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर के साथ किया था, लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट को एंटरप्राइज ग्रेड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि बड़े बड़े बैंक यूज कर सके, ऊबर यूज कर सके, बैंक यूज कर सके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उसके लिए थोड़ा टाइम जो है वो हमने 5-6 महीना वो टाइम लिया, क्योंकि उसको हम सिक्योर बना सकें, जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन कर सकें, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर रह सके, और उसके बाद हमने जो है 5 महीने के बाद रिलीज कर दिया। तो मेरे हिसाब से जो है
4-5 महीने का टाइम लेना, जिससे कि लोगों की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और सबको जो है इन सब के ऊपर टाइम दिया जा सके, इन सबको जो है प्रॉपर बनाया जा सके, जिससे कि लोग ट्रस्ट कर सकें कि उनका डेटा सिक्योर रहेगा, डेटा बाहर नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा क्या 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 आपने किया और कितना अलग है? तो ये प्रोडक्ट के पीछे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी, कि क्या, जैसे कि बड़े बड़े बैंक, यदि आप उनको डाटा देते हैं तो वो डेटा बाहर नहीं भेज सकते। आप उनको उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे कि आप बैंक के साथ काम करते हैं कि आपका डेटा किसी और को ना दे रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमें उनको सपोर्ट करना है तो हमको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह के रन करना होगा। डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, डेटा जो है हर इंसान का उसके अंदर रहना चाहिए। वो आपका जो है डेटा किसी और के मॉडल को ट्रेन करने में नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। आपका जो डेटा है वो जो है क्या कहते हैं, हम खुद ट्रेन ना करें, उसके लिए होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं इन एडिशन टू ऑल द कैपेबिलिटी दैट यू सॉ। वो इंपॉर्टेंट है, जो कि बाकी लोग का क्या है कि आप सिंपल जो है इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सको तो वो जो है दे देगा, लेकिन वो डेटा जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर हो, जो गारंटीड करे कि जो है जो आंसर है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर से ही आंसर हो, तो वो सारी गारंटी जो है ये प्रोडक्ट देता है। सर किस लैंग्वेज में रहेगा? कुछ लैंग्वेज वगैरह आप लोगों ने रखा है? तो ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लैंग्वेज में जो है अवेलेबल है। तो आपने अगर डेमो देखा तो उसमें मैंने जो है डॉक्यूमेंट इंग्लिश में था और सवाल गुजराती में पूछा, और डॉक्यूमेंट मराठी में था और सवाल अंग्रेजी में पूछा। तो ये एक अच्छी चीज़ क्या है इस डॉक्यूमेंट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, कि आपका जो लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो बहुत सारे जैसे ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, तो उसमें सब जो वर्ड्स होते हैं बहुत सारे मीनिंग अलग हो जाते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? हाँ, तो मैं बताता हूँ। तो जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो रही है इसके पहले की, वो क्या करते हैं, एक एक सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके अगर कुछ गलतियाँ हुई तो एक सेंटेंस में वो गलतियाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव एआई जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझता है बेस्ड ऑन पूरा इनपुट, जो सारा जो इनपुट दिया है आपने, या पूरे डॉक्यूमेंट को। और अगर वो आपको समझ में आ गया और उसके बाद आप आंसर कर रहे हो, तो ये एक्चुअली लाइक ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, ये उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। जैसे कि आप मुझसे हिंदी में सवाल पूछे और मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दूं, तो ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में जवाब निकाल रहा हूँ अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं सोच रहा हूँ और डायरेक्टली इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट वैसा है। तो इसमें ट्रांसलेट नहीं कर रहा है इस वर्ड को, इसमें क्या कर रहा है कि आपके उसको समझ रहा है और उसके बाद वो जनरेट कर रहा है। और इस वजह से जो है इसमें गलतियाँ कम हो रही हैं, तो आउटपुट नहीं आ रहा है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। सर अभी अपनी वेबसाइट क्या टारगेट है आपका आगे चल के? टारगेट ये है कि जितने भी इंडस्ट्री जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, इन सब को जो है हम मोर एफिशिएंट बना सकें। क्योंकि इन सब ये सारी जो चीज़ें हैं ये जनरली किसको सर्व करती है, आप लोगों को, राइट। अगर ये सारे लोग जो है इन सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये किसका फ़ायदा है, ये आप लोगों का। जैसे आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको लोन 5 मिनट में मिले रादर देन जो है 5 हफ्ते में, तो सबको फ़ायदा है ना। अगर आप जब इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, अगर 3 महीने के बजाय वो 3 दिन लगे तो ये सबको फ़ायदा है ना। तो हमारा क्या गोल है कि टू इनेबल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारा ये प्रोडक्ट यूज करके सारी दुनिया को बेहतर सर्विस दे सकें। इतने सारे कंपटीशन है मार्केट में, इसी कंपटीशन है। स्टार्टिंग में लोग ऑफर देते हैं, पैसा ट्रांजेक्शन करो तो कुछ ऑफर बाद में बंद कर देता है। तो ये ऑफर आप भी दे रहे हो या बाद में बंद कर देते हो? तो हम जो है इस बिजनेस में पिछले 7-8 सालों से हैं एक्चुअली। अगर आप देखोगे, और हमारे ये सारे कस्टमर्स हैं, हम बहुत सारे कस्टमर्स हैं पिछले 4-5 सालों के साथ काम कर रहे हैं। साइंस में क्या है ना, आपको देखोगे हर साल चीज़ें सस्ती होती जाती हैं, बाकी चीज़ों में हर साल चीज़ें महंगी होती जाती है। तो एक्चुअली जो हमारा प्राइस है और हमारा जो प्रोडक्ट है हर साल थोड़ा सस्ता हुआ है, ना कि महंगा। तो और मेरे हिसाब से वो ट्रेंड चलता रहेगा। तो लॉगिन डिटेल्स बताइए, मतलब किस तरह लॉगिन कर सकते हैं आपका जो वेबसाइट है इंस्टाबेस, एंड व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस इंस्टाबेस? तो लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है बस। और चार्जेस, अभी जो आता है कुछ दिन चलते हैं, 3 दिन यूज होने के बाद फिर लोग चार्ज करते हैं। हाँ, तो वो बेसिकली क्या है, पहला 500 क्रेडिट फ्री है, उसके बाद जो है
हर क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कितने पेज के ऊपर पूछ रहे हो, तो उसके लिए वो जो है 8 या 9 पैसे लगते हैं, 7 या 8 पैसे पर क्वेश्चन के लिए। लेकिन आप सोचो कि आप जो है जैसे बड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर जो है आप सवाल पूछ रहे हो कि बताओ इसका की मुद्दा क्या है, 8 पैसा जो है काफ़ी सस्ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है बहुत महंगा है। तो जो क्रेडिट जो हम चार्ज करते हैं वो हर क्वेरी के लिए जो है बहुत ही कम है। सवाल पूछना है कि भाई इस चीज़ का सवाल बताओ, तो उसने जो इंटरनेट से सीखा है उसके ऊपर जवाब देता है। और चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा टूल है। चैट जीपीटी उसमें इंटरनेट से रिजल्ट देता है, राइट। लेकिन अगर आपको जो है जैसे कि आपको जो है प्रॉपर्टी पेपर खरीद रहे हो और उसने सारा प्रॉपर्टी का जो है डॉक्यूमेंट दिया, आपको गूगल सर्च से आंसर नहीं मिलेगा ना कि इसमें क्या। आप लॉयर के पास जाओगे, बोलोगे भैया मेरा पेपर पढ़ो और बताओ कि इसमें सब ठीक ठाक है या नहीं, राइट। तो इंस्टाबेस क्या करेगा, आप इंस्टाबेस को अपना प्रॉपर्टी पेपर दोगे, वो आपके पेपर को पढ़ेगा और उसके हिसाब से आंसर देगा, वो इंटरनेट का आंसर नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हमारा क्या मानना है कि इंटरनेट भी अच्छे टूल है, गूगल है, चैट जीपीटी है, वो काफ़ी अच्छे टूल है। लेकिन कोई ऐसा टूल नहीं बनाया गया है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को समझे और जो आंसर दे वो बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर दे। तो वो इंस्टाबेस करता है। कुछ टारगेट ऑडियंस वगैरह रखा है आपने? टारगेट ऑडियंस वगैरह रखा है? टारगेट ऑडियंस मतलब बैंक लोन देता है आपके डेटा पे, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिसाइड करता है आपके डेटा पे, आपको मेडिकेशन देता है आपके हेल्थ हिस्ट्री के ऊपर। तो हमारे जो ऑडियंस जो है वो लोग रियल टाइम में आपके हिस्टोरिकल जितने भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है के हिसाब से आपको उसके लिए बनाया गया है। Across all the different industries, banking, insurance, government, and we are investing even more and more for all. ये सारे इंटरनेट डेटा के ऊपर बने सर्च करो और वो सारे एडवांस और हमारे पास भी जो हमारा जो रिसर्च है वो हमेशा बेंचमार्क करता रहता है उसके हिसाब से। तो ये जो फील्ड है, ये हमने जो है ये जो मॉडल जो है हम लोग हर 2 हफ्ते में नया जो है बदलते रहते हैं। तो मतलब जो अगर AI हब जो प्रोडक्ट देखोगे हर 2 हफ्ते में हम लोग अपडेट करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और ये ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसी लेवल पे रहे जहाँ पे बाकी सारे टॉप क्लास प्रोडक्ट्स हैं। लिस्टिक्स की बात होती है, सेकंड लिस्टिक की बात हमारी के क्वेश्चन है कि कितना परसेंट आप कह सकते हैं कि 100% सही एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है, या कुछ तो होगा ना। हाँ हाँ, जैसे देखो कोई भी इवन अगर आप इंसान को भी बोलोगे, लॉयर को भी, वही गलतियाँ तो करते हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि गलतियाँ नहीं करता। अगर आप किसी को टाइप करने बोलते हैं वो भी मिस्टेक करते हैं। तो हमने जो देखा है टिपिकली जो है जो इन जनरल जो है जो हमने जब बेंचमार्क किया है तो फॉर मोस्ट बेसिक स्टफ लाइक ये ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर करता है, मतलब 97-98%। लेकिन ऐसी अच्छी भी बात क्या है इसमें कि अगर जो है इसको कोई चीज़ नहीं आती है तो ये आपको गलत आंसर नहीं देगा। ये बोलेगा कि भाई I cannot answer you this question because I don't have the data available. तो ये बोलेगा कि now I give up and you have to do it yourself. सो इन पर्टिकुलरली एक ऐप टाइप है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, राइट? इंटरनेट से सर्च connected इंजन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें ट्रांसलेट कर होता है या कुछ इसमें कुछ बनाने कुछ में बस है नहीं पैटर्न, तो फिर कुछ बनाने प्रेजेंटेशन वगैरह तो वैसा कुछ बना सकता है। हाँ, हाँ। हम अगर टाइप करेंगे हाँ, तो एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि एक्चुअली काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रांसलेशन। ये ऐप का ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ये ट्रांसलेशन ऐप नहीं है। ये ऐप आपके डॉक्यूमेंट या आपका डेटा समझता है और उससे आप जिस किसी भी लैंग्वेज में सवाल पूछो उसमें आंसर देता है। तो कोई ट्रांसलेशन नहीं करेगा, समझ कि इट हैज बेस वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी एंड देन बीइंग एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। अब आंसर आप किसी अलग लैंग्वेज में पूछो तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेशन होगा, लेकिन द कैपेबिलिटी क्या है कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंटेंट। आपने कहा ऐप भी बनाता है ये। हाँ, तो ऐसे बोलोगे कि भाई ये रिपोर्ट पढ़ो और मेरे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएगा। मॉनिटरी इसको किस तरीके से किया जाए? बताया कि जो है पहला क्रेडिट फ्री है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और उसके बाद जो है
पर क्वेरी का 1 सेंट चार्ज किया जाता है। सर आप लोग भी कहना चाहेंगे जैसे आपने स्टार्ट किस तरह से AI आगे बढ़ रहा है? तो हमने काफ़ी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से बात की एंड वी आर वेरी एनकरेज्ड बाय सीइंग हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू बी इन द फोरफ्रंट ऑफ AI। सब लोग AI अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर कस्टमर सर्विस कर सके, उनका कॉस्ट भी कम रहे और नई नई चीज़ें दे पाए। So we're seeing a lot of excitement in India to adopt all of this, and Indian companies are going ahead of the curve. We think we have all the right ingredients in India. We have the right people, we have the right technology, we have the right funding capabilities. So फिर India के लिए तो sky is the limit, and I think that we're excited to partner with Indian organizations to adopt AI. सर दैट इज जो आपका सजेशन क्या है? आई थिंक AI हब सबके लिए, आप जिससे पूछ रहे थे टारगेट, मैं ये बताऊंगा कि आज आप ही लोगों ने डेमो देखा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप घर पे जाके तो खुद एक बार इसको पक्का से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी यूज़फुल है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये हर इंसान के लिए यूज़फुल है, क्योंकि आपके वो सबसे पहले तो भाषा के बैरियर को तोड़ता है, और ऑर्गेनाइजेशंस छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, क्योंकि हम सारे सिक्योरिटी कंप्लायंट हैं, आपके डेटा को सिक्योर और सेफ रखते हैं, ये सबके लिए यूज़फुल है। और जो आज के दिन में स्टार्टअप्स हैं उनको अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए बहुत ही मिनिमल टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ वो अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं जब जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो। तो हम पूरे देश के स्टार्टअप, स्टूडेंट्स, मीडिया पीपल, लॉयर्स सबको एनकरेज करते हैं कि आप एक बार AI हब ट्राई करिए, इस्तेमाल करिए और फीडबैक दीजिए। आपका काम इससे आसान होगा।